Hello students, good morning. Hope you will be fine at your respective places. We were discussing with the morphology of the flower, and last time we have studied the various types of the flower rather जो हमने वहाँ पर जो हमने उसकी basis जो बनाई थी. The basis of that classification was the what is the relationship of the different worlds, that is the calyx, corolla and androecium in relation to the gynoecium. Today we will start the first या outermost whorl, that is the calyx. Calyx की अगर हम बात करेंगे, it is the outermost whorl of the flower. outermost whorl of the flower. दूसरी बात, जो इसके इंडिविजुअल अगर हम कहेंगे, जो इसके इंडिविजुअल ऑफ दिस वर्ल्ड of which it is made up of, it is made up of the individuals of this world. These are called as the sepals. It is the outermost whorl of the flower, and जो इसके individuals है of which this calyx is made up of, those individuals are called as sepals. These sepals अगर हम बात करेंगे, they are mainly green in color. They are mainly green in color. Now these sepals, जो इनकी हम कहेंगे फॉर्म जो हैं, अगर हम इनकी फॉर्म्स देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ सेपल्स अगर हम देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ सेपल्स, these sepals, they may be free, they may be fused. They may be free, they may be fused. If they are free, that means they are separated from one another. या हम कहेंगे they may be fused. Fused में हम क्या देखेंगे कि they may be attached, they may be joined with each other. Free को हम क्या बोलते हैं? Free is called as the polysepalous, and this fused is called as the gamosepalous. When the individual members, when the sepals अगर होंगे, when they are free, when they are not joined together, then it is called as the polysepalous. When they are fused, it is called as the gamosepalous. Polysepalous हम किस में देखते हैं? For example, we have got the Brassica campestris. इसमें हम देख सकते हैं, that is this what we call as the polysepalous, where we will see that this example, it is Brassica campestris. we have given the example जो हम polysepals कहेंगे, इसकी जो example, it is Brassica campestris. Now when these sepals, they are fused, they are joined together, इसकी हम example अगर हम that is Petunia. Now there is the way how we can show these polysepalous, how we can show these free sepals and these fused sepals. You are well aware, जब हम डायग्राम बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम में, वहां पर हम इन सेपल्स को किस तरह दिखाते हैं, दैट इज बोथ व्हाट वी कॉल्ड एज दिस पॉलीसेपल्स को हमको किस तरह दिखाते हैं, या जो हमारे पास फ्यूज्ड सेपल्स उनको हम कैसे दिखाते हैं. Being the outermost whorl, it is shown like this, triangular like structure, like this. It's a diagram. This is the sepal. Again, this is the sepal. Now यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ी बहुत ही गैप डाली. That means these are the free sepals. अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि if we are going to show the fused sepal, I will show this knob-like structure, like this knob-like, that is, it is joined with this sepal, that is called as the fused sepals. This is the polysepalous condition, this is the gamosepalous condition. Now कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि almost the sepals जो होते हैं, they are mainly green in color, but there are some instances in some plants where we will see that these sepals, they are colored. They are not green in color, they are colored in
they are colored, and that sepal is called as a petaloid. That is called as the petaloid. Now we have got various functions. There are some functions which are performed by these sepal. The very much important function जो हम देखते हैं, the very much important functions that is being performed by these sepals is first one. अगर हम बात करेंगे that is it helps, या जो इसकी main है that is the protection of the flower mainly in the bud stage. जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम देखते हैं किसकी, what we call as the sepals, कि that it helps in the protection of the flower. जो protection है mainly दिखा देता है, it is mainly found in the bud stage. सेकंड वन अगर हम देखते हैं जो इसकी मेन फंक्शन, जो इसकी दूसरी फंक्शन है that is this sepals. अगर हम कैलेक्स की बात करेंगे, they help in the process of photosynthesis being green in color. थर्ड अगर हम देखेंगे एक और फंक्शन हम इसकी देख सकते हैं, when they are colored, हम कहें besides green in color, green color के अलावा when they are colored, they help in attracting the insects. वो insects को भी attract कर सकते हैं. First one, they help in the protection, mainly in the bud stage. Second one, they help in the process of photosynthesis. Third, they attract the insects. That means they can help in the process of pollination. Mainly तब when they are, जब वो किस form, when they are colored, जब वो colored हो सकते हैं. These are the some of the functions which are being carried by these sepals. Now, these sepals की अगर हम बात करेंगे, कि how much time they remain with the flower, जो duration इनकी है, how much time they remain with the flower, we have got different types of they are of different types. अगर हम देखेंगे first one जो हमारे पास type है, that is called as the, जो हम बात कर लेंगे कैडुकस. सेकंड जो हमारे पास है that is called as a deciduous. थर्ड जो हमारे पास है that is the persistent. कैडुकस. अगर हम इस वाले सेपल की बात करें, अगर हम सेपल्स की बात कर लेंगे कि that they remain with the flower only for a very short duration of time, बहुत कम टाइम तक ही रहते हैं. कि when the bud, जो हमारे पास bud होता है, when this bud it opens कि they remain, जो sepals होते हैं they fall from the flower, वो फ्लावर से गिर जाते हैं. कब? when the bud जो होता है it opens into a flower, जब इस bud से क्या निकलता है, फ्लावर निकलता है, and the sepals they fall. गोया they open sepal, जो हम कहेंगे sepals fall, वो fall हो जाते हैं, sepals fall off from the flower, fall off when they sepals fall off when the bud bursts open, जब ओपन हो चला जाता है. sepals fall off when the bud bursts open. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेंगे कैक्टस. दूसरी बात डिसिडुअस की बात, कि जो ही बड ओपन हो जाता है इससे फ्लावर निकलता है, सेपल्स दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, वो नीचे गिर जाते हैं. डिसिडुअस. इन द केस ऑफ डिसिडुअस हम क्या देखते हैं कि जो सेपल्स होते हैं दे रिमेन फॉर ए शॉर्टर एंड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हम फ्लावर में क्या देखते हैं कि बड फॉर्मेशन होगी, बड के बाद हम फ्लावर ओपन हो गया, वी विल सी 4 डिफरेंट वर्ल्ड जो होते हैं वो हमको आसानी के साथ दिखाई देते हैं. एंड अगेन जो हम देखते हैं कि पॉलिनेशन भी हो जाती है.
पॉलिनेशन भी हो जाती है. Then we will see these sepals, जो हमारे पास एंथर होता है, जो हमारे पास जो एंड्रोशम और गाइनेशम होता है, when they anthers they pollinate, they get transferred towards the stigma, pollination भी हो जाती है. Then at that time, after that time, we will see जो ये sepals होते हैं they fall off. गोया हम ये कहेंगे जो ये sepals होते हैं they remain with the flower for a longer period of time and it is found in majority of the cases. It is found, जो हम कहेंगे जो sepals होते हैं they remained for a longer time, mainly up to the time of pollination, and it is mainly found in the majority of the flowers. Third, persistent. Persistent ये होता है they remains forever, they remains for a longer period of time. Flower के बाद भी हम क्या देखते हैं, fruit बन जाता है, fruit के साथ भी हम देखते हैं sepals remain there. You might be well aware with the brinjal में आपने क्या देखा होगा. You might have seen like this structure, and then we will see this is the brinjal. Now this part, these leafy-like structure, these are nothing. These are simply the sepals which remain with this brinjal, जो इस brinjal के साथ रह जाते हैं. And this part, this greeny part, it is simply the sepal, and these sepal are called as the persistent sepal. They remain even after the flower. You might have seen in the strawberries. Strawberry में भी आपने क्या देखा होगा कि वहां पर भी ये sepals रह सकते हैं. इवन आफ्टर जब हम वो फ्लैशी पार्ट जो होता है जो हम खाते हैं, जो हम फ्रूट जो होता है वो हम खा लेते हैं, एंड द सेपल्स आर देयर एंड दैट सेपल्स आर कॉल्ड एज द persistent sepal. So we have studied the three different types of the sepals, and the sepal जो हमने क्लासिफिकेशन देखी, it is mainly जो हमने क्या देखा कि टाइम ड्यूरेशन, कि कितने देर तक ये sepals they remain with the flower. फर्स्ट कैड्यूकस, सेकंड डिसिडुअस, थर्ड persistent. कैड्यूकस की अगर हम बात कर लेंगे कि वो फ्लावर से गिर जाते हैं, दे फॉल ऑफ, बिल्कुल छोटे पीरियड तक वो रहते हैं कि बड जो होता है वो ओपन हो जाता है एंड दीज सेपल्स दे स्टार्ट फॉलिंग. सेकंड हमने देखा डिसिडुअस, दे रिमेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवन अप टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. फिर हम देखते हैं persistent में क्या देखते हैं कि दे रिमेन फॉर इवन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वहां पर हम ये देखते हैं कि जो फ्रूट के साथ भी हम क्या देखते हैं कि वहां पर हम देखते हैं कि दैट सेपल्स रिमेन देयर. हमने एग्जांपल दी ब्रिंजल की, हमने एग्जांपल दी, हमने व्हाट वी विल सी स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल मैंने दे दी. नाउ देयर आर सम मॉडिफिकेशंस ऑफ दीज सेपल्स. We have got some modifications of sepals. Modification of sepals. What we will see, first one जो हमारे पास modification, that is called as the pappus. You have seen is the Asteraceae family sunflower में, वहां पर हमने क्या देखा, this is the fruit. फ्रूट के बाद हमने क्या देखा, इसके ऊपर हम क्या देखते हैं, you will find these wing like structure या these feather like structure. These wings are these feather like structure, these hair like structure. This is called as the pappus, and the main function of this pappus is the dispersal of the fruit. So first जो है mod, that is the pappus. This pappus जो है it is found in the family Asteraceae, mainly in the members of the family Asteraceae. Sunflower में क्या देखते हैं कि fruit के ऊपर हम क्या देखते हैं कि that there are some hair-like structure which are called as the pappus, and these pappus की बात हम क्या देखते हैं, they help in the dispersal of this what we call as the seed, as this flower. Second जो हमारे पास है, we have got the leafy sepals. लीफी सेपल्स में हम क्या देखते हैं कि फ्लावर इज देयर, अ वेरी गुड फ्लावर इज देयर, उसके 4 वर्ल्स हमारे पास होते हैं, लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं कि जो सेपल्स होते हैं दे आर देयर, सेपल्स आर फाउंड देयर, एंड वन ऑफ दीज सेपल जो होता है इट बिकम्स समवट मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, and this
is mainly white in color. This is simply the sepal, but it gets modified into a leaf-like structure which is mainly white in color. This is called as the leafy sepal and it is mainly found in the, अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, मैसेंडा यहाँ पर ही पाया जाता है. Sepals are there are mainly 5 sepals. Out of these 5 sepals, one sepal जो होता है it becomes modified into the leaf and that leaf is mainly whitish in color. Third हम देखेंगे जो हमारे पास है modification की, that is in that it becomes spiny in nature, that is spinous, that it becomes spinous in nature. हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ट्रापा में हम क्या देखते हैं, जो ये सेपल होता है इट बिकम्स समवट स्पाइनी इन नेचर एंड दैट स्पाइनी जो होता है इट इज मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. So these are some of the modifications which we have seen. First one, that is the pappus. Second one, we have seen the leafy structure. We have seen the spinous nature of this sepal. This is all for today. हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वहां पर हम देखेंगे सेकंड वर्ल जो हमारा है दैट इज द करोला, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. एंड अंटिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स.